Hello, Bacho. Let's read the question. The question says these questions given below consist of an assertion and the reason. Use the following keys to choose the appropriate answers. Okay? These are the keys. Okay. So let's do the question. Bacho, in this question, the assertion is okay. Fructose. Fructose does not contain an aldehyde group, but still it reduces tolerance reagent. Okay, Bacho. So what is the structure of fructose? It is CH2OH C double bond O, CHOH 3 and CH2OH. ठीक है बच्चों? So this is the structure of fructose. And fructose do not contain aldehyde group. Instead, it has carbonyl group. ठीक है? So still it reduces tolerance reagent. So this is a correct statement. ये tolerance reagent को reduce करता है. ठीक है? So statement is correct. Now why? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ एल्कली, ठीक है, इन द एल्कलाइन मीडियम क्या होता है बच्चों, आइसोमराइजेशन होता है एंड इन द फर्स्ट स्टेप इट फॉर्म्स, इन द फर्स्ट स्टेप इट फॉर्म्स मैनोस, ठीक है, which is a epimer of glucose, ठीक है, in the first step it forms mannose during the isomerization. This is the structure of mannose. ठीक है, mannose is the epimer of glucose and in the next step it forms the indiol, ठीक है, indiol. This is the structure of indiol and this is due to the enolization. This process is called enolization and it forms indiol. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे enolization होता है. This is called enolization. And due to the enolization, it is converted to further glucose. That is CHO, CHOH, O and CH2OH. ठीक है बच्चों, दिस कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में फ्रुक्टोज का क्या होता है बच्चों, आइसोमराइजेशन होता है, कन्वर्ट्स टू मैनोज एंड देन ग्लूकोज एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एपीमराइजेशन. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपीमराइजेशन ड्यू टू देयर इज अ कॉन्फिगरेशनल चेंज एट C2 carbon, है ना? There is a configuration change at C2 carbon, so this process is also called epimerization. So in presence of dilute solution of alkali, fructose undergo epimerization to form glucose and mannose. ठीक है बच्चों? So therefore, due to this reason and the presence of the aldehyde group, it reduces tolerance reagent. Okay, so the reason is a correct statement and it also explains the assertion. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इफ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.